Redmi Note 10, Redmi Note 10s, Redmi Note 10T, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, and now we have the Redmi 10 Prime. This is not under the Redmi Note series of devices, but let's see what this device has to offer. ये device price होगा around 12,000 rupees. I'm expecting that because pricing के बारे में मुझे अभी तक confirm नहीं पता है. But considering Redmi Note 10 is available for 14,000 now, price थोड़ा 500 रुपए hike करके 14,000 rupees तक पहुंच गए. And this is going to be its competition in my opinion, because primarily it's going to be about whether you should go with 60 Hz AMOLED or 90 Hz LCD. ये question था in throughout 2020 and 2021 में भी start में था, and we still are going back to the question. Let's see what Redmi Note 10 Prime has to offer. First of all, Helio G88 प्रोसेसर है, and बहुत सारे डिवाइसेस में अभी Helio G88 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड ये डिवाइस से एक्चुअली मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी. मतलब 10,000 में आई वाज एक्सपेक्टिंग द परफॉर्मेंस टू बी रियली गुड एज यू आर लुकिंग एट द गेम प्ले राइट नाउ. व्हेन इट कम्स टू द गेम प्ले मुझे लग रहा था कांस्टेंट 40 FPS मिलेगा, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट. ये बहुत अर्ली वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन के साथ मे बी बेटर और हो सकता है, बट एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो तो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है. तो फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल रहे, कुछ टाइम पे तो वो बिलो 30 FPS जा रहा था, बहुत सारे ओकेजन्स पे 35 भी जा रहा था. I will check with other devices which are launching soon with Helio G88 processor, and I'll update about that as well. When it comes to day-to-day life usage over there as well, I felt that MIUI was not very well optimized, so I'm not sure if this is MIUI's fault or this is G88 not being very well optimized. I would say I would rather wait for another software update. मेरे गेमिंग चैनल पे मैं सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद अगर परफॉर्मेंस बेटर हुआ तो वापस वीडियो ऑफकोर्स डालूंगा Redmi 10 Prime का. बट फॉर नाउ डे टू डे लाइफ यूजेज में भी थोड़े स्टेटस देखने के लिए मिले, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज Redmi Note 10 Pro, I know comparison is not fair, Snapdragon 730G against Helio G88 processor. But still, I would say Redmi Note 10 Pro was much smoother with 120 Hz refresh rate display as compared to the 90 Hz refresh rate present on this particular device. And I guess that's about the software optimization. Now the device also comes with a new 50 megapixel camera sensor. Once again, this is a camera sensor which we'll see in a lot of devices going forward, and these are some of the sample shots captured with the Redmi 10 Prime. Considering the price tag of 10 to 12,000 rupees, I'm assuming 12,000 rupees, the pictures look good considering every device's price has been increased now. Redmi Note 10 ही भाई 14,000 हो गया. I would any day recommend that device अगर आपको बहुत अच्छा कैमरा चाहिए. 10 Pro तो बेस्ट है मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए. 12,000 rupees में this feels like a very good performance. Some of the images are little bit on the warmer side, but then once again that's something which can be fixed with a software update. In the primary camera sensor, details are there, but in ultra wide angle sensor, obviously as usual we have little bit softer images, which is quite normal. So overall, when it comes to camera, I feel this is a good device, not something exceptional, not bad by any means. Now build quality and looks wise, this is something I enjoyed on the Redmi Note 10 Prime, and I would say that I enjoyed this design and looks more than Redmi Note 10 series of devices. Note 10 Pro, 10 Pro Max में the design was very good, but this one looks even better. It resembles S21 Ultra, so मुझे लगता है कि भाई ये मतलब कुछ अलग बढ़िया कैमरा सेटअप वगैरह होगा. मैंने अनबॉक्स किया वैसे ही मुझे लगा भाई क्या दिख रहा है. एंड व्हाइट कलर, ओ माय गॉड, लुक्स फैंटास्टिक. अगर लेना है आपको तो व्हाइट कलर ले लो. ये ग्लॉसी नहीं है, ये मैट बैक पैनल है. फिंगरप्रिंट्स तो दिखेंगे ही नहीं, और अगर आप ट्रांसपेरेंट बैक पैनल भी यूज करोगे तो व्हाइट दिखेगा. साइड में ये सिल्वर कलर का मेटल तो नहीं है ये, दिस इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ पॉलीकार्बोनेट, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, नो कंप्लेंट्स. ये प्राइस में कौन ही मेटल देता है. तो 3.5 mm हेडफोन जैक दिया भाई. टॉप पे हम लोग को आयर ब्लास्टर सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, एंड सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक इज ऑल्सो देयर सो दैट यू गेट बेटर माइक क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू कॉल्स. 2 speakers are present, one at the bottom, one at the top, and USB type C port दिया. अगर micro USB port देते तो वीडियो नहीं करता, obviously नहीं होना था ये. No one should give micro USB ports now. When it comes to display quality, this is an LCD panel. Now this is how the display looks. Overall it is similar to any other LCD display panel in this particular price segment. अगर आपको OLED AMOLED screen चाहिए तो आपको obviously pay करना पड़ेगा extra for Redmi Note 10, and then आपको 60 Hz का display मिलेगा. As this comes with 90 Hz display, I would it's difficult. It's a personal choice. If you ask me personally, I would choose 90 Hz good LCD panel over 60 Hz AMOLED panel, because
मुझे वो डे टू डे लाइफ में स्मूथनेस वो लगता है एंड आई कैन डेफिनेटली नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन 60 हर्ट्ज पैनल एंड 90 हर्ट्ज पैनल. दैट्स व्हाई. So when it comes to display quality, overall this is a pretty good display quality, no complaints over there as well. Now global variant of Redmi 10 Prime comes with 5000 mAh battery, but Redmi decided to go with 6000 mAh battery for the Indian variant. 18 watt charging is supported, but you get 22.5 watt charger out of the box, and fingerprint sensor is there. If I just keep my finger here and the device gets unlocked. Fingerprint sensor quality is something which actually I was happy with, because performance इतना मतलब टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं था. आई एम नॉट सेइंग आई एम कंपेयरिंग दिस विथ OnePlus 9 Pro 65,000 वाला. Even other devices in this price segment, some of them are little bit more optimized as compared to what Redmi 10 Prime offers. आई फील सॉफ्टवेयर अपडेट आने दो थोड़ा, फिर एक और वीडियो कर दूंगा ऑन माई गेमिंग चैनल गेमिंग के बारे में भी, बिकॉज G88 प्रोसेसर भाई गेमिंग ओरिएंटेड होना चाहिए, बिकॉज 10-12 हजार में अगर फोन लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज वो T610 जो T610 जो भी प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो चिपक की 40 FPS दे रहा है, एंड वो डिवाइस के प्राइस माइक्रोमैक्स का इंटू बी इज अवेलेबल फॉर 8,500 रुपीज. नॉट अ फेयर कंपेरिजन कंसिडरिंग अदर स्पेसिफिकेशंस. But still, you get my point that I was expecting better gaming performance from the Redmi 10 Prime. Gaming is not the only thing, but if other factors are something which you are considering, then as you saw, camera is pretty decent. Battery life is going to be good. Headphone jack is there. Dual noise cancellation mic. It is there in almost all the phones. About 12,000 rupees. But yeah, that's a good feature to have. And I guess that's pretty much it for this particular video. If you enjoyed it, give this video a thumbs up, subscribe to the channel if you haven't already, and press the bell icon so that you get notified next time I upload a video like this one. So yeah, thank you guys. Thank you for watching.